Hello friends, I am Aditi and today we will going to learn the living world. This chapter is of 6th standard and it is of the science. There are many types of plants and animals around us. They show some differences and some similarities between them. Yet with the help of the certain features, we can tell that they all are the living things. But these features are not be seen in the non-living things. So such types of features are known as the characteristics of living things. तो हमारे आजू बाजू में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. वो उनमें कोई कोई विविधताएं दिखाता है या कोई कोई सिमिलरिटीज़ एकदम एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि वो हमको बताते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है. लेकिन ये सब जो फीचर्स होते हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स अजैविक में नहीं दिखा जाता है. तो ऐसे टाइप्स के फीचर्स को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. A baby grows to become an adult, man or woman. At his growing time, he gains the height, weight and strength. तो बेबी ग्रो होता है एक एडल्ट बनने के लिए. तो मैन और वुमेन में ये बेबी ग्रो होता है. तो उस वक्त में जो बेबी ग्रो होता है तो वो हाइट, स्ट्रेंथ और वेट ये प्राप्त करता है. इन द सिमिलर मैनर द एनिमल्स आल्सो ग्रो टू बिकम एन एडल्ट. तो वैसे ही एनिमल्स भी होते हैं, वो एडल्ट में ग्रो होते हैं. द ह्यूमन्स रिक्वायर बिटवीन द 18 to 21 एज फॉर द ग्रोथ. तो ह्यूमन्स को कितने एज लगते हैं? 18 to 21 ईयर्स उनके ग्रोथ के लिए. नाउ वी विल सी आवर फर्स्ट पॉइंट दैट इज द फूड नेसेसरी फॉर द ग्रोथ. Food necessary for the growth. Plants also need food for their growth. So with the help of sunlight, the plants take the water and nutrients from the soil and the carbon dioxide from the air. This process takes in the leaves of the plant. And it is brought about with the help of the sunlight and due to the chlorophyll present in the plant leaves. तो प्लांट्स को भी फूड लगता है अपनी ग्रोथ के लिए सनलाइट की हेल्प से. तो प्लांट क्या करता है, जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में प्रेजेंट होते उनको ले लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होते उनको ले लेते हैं. और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये प्लांट के लीव्स में जगह लेता है. तो ये सब कभी होता है कि जब भी सनलाइट प्रेजेंट होता है तभी ये प्रोसेस होता है, और जब भी क्लोरोफिल प्लांट के लीव्स में होता है तभी. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस. तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस. And the plants remains green due to the chlorophyll in them, and during this process the oxygen is given out. तो प्लांट्स ग्रीन क्यों रहते हैं कि क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो ग्रीन रहते हैं. और जब ये प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस के वक्त जो ऑक्सीजन होता है ये पाया जाता है. नाउ एनिमल्स डू नॉट कंटेन द क्लोरोफिल, दे डू नॉट कैन ऑब्टेन देयर ओन फूड. सो animals like the goats, horse eat the grasses, while the wild animals like tiger, lion use the other animals for their food. तो एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपने खुद का खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो एनिमल्स जैसे गोट और जो हॉर्सेस होते हैं वो ग्रास को खाते हैं, और जो वाइल्ड एनिमल्स, जंगली एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को अपना शिकार बनाते हैं खाने के लिए. सो आवर फर्स्ट पॉइंट गेट कंप्लीटेड, दैट इज द फूड नेसेसरी फॉर द ग्रोथ. नाउ वी विल सी आवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज द रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया. रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया.
Living things need the oxygen for the life. Inhaling oxygen and exhaling the carbon dioxide and formed in the body due to the use of the oxygen is known as the respiration. तो लिविंग थिंग्स को भी ऑक्सीजन लगता है जीने के लिए, तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना ये हमारे बॉडी में फॉर्म्ड होता है यूज़ ऑक्सीजन की यूज़ से, तो इसको क्या बोला जाता है? रेस्पायरेशन यानी श्वसन क्रिया. द एनिमल्स हैड द स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर द रेस्पायर while the microscope respire by the means of the microscopic pores on their stems and the leaves. तो एनिमल्स के पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं रेस्पायरेशन करने के लिए, लेकिन प्लांट्स कैसे रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं कि उनके जो लीव्स है, उनके जो पत्ते में माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं या स्टीम पर भी, तो उसकी हेल्प से ये रेस्पायरेशन श्वसन क्रिया करते हैं. द रेस्पायरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. रेस्पायरेशन या लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है. आवर सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड, दैट इज द रेस्पायरेशन. नाउ वी विल सी आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज द एक्सक्रिएशन. Excretion. Waste substances are formed in the body during many processes that takes place in the bodies of the animals. These are called as the excreta, and the process of eliminating them from the body is known as the excretion. तो waste substance excretion यानी मल. तो वेस्ट सब्सटेंस जो खराब पदार्थ होते हैं ये बॉडी में होते हैं बहुत सारे प्रोसेस के वक्त, जो कि एनिमल्स के बॉडीज़ में मतलब होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? एक्सक्रिएटा. और जो प्रोसेस होता है ये बॉडी को बाहर निकालने के लिए, तो इसको क्या कहा जाता है? एक्सक्रिएशन. प्लांट्स टू एक्सक्रिएट बाय द for example, some plants shed leaves in the specific seasons. Waste substances stored in the leaves of the plants are shed along with the leaves. तो प्लांट्स भी एक्सक्रिएट करते हैं. एग्जाम्पल के लिए कौन से जो प्लांट्स होते हैं वो लीव्स को मतलब शेड यानी निकाल देते हैं, तो लीव्स को निकाल देते हैं एक स्पेसिफिक सीजन में. तो वेस्ट सब्सटेंस जो खराब पदार्थ होते हैं जो कि लीव्स होते हैं उसमें स्टोर्ड मतलब जमा होकर रहते हैं, तो प्लांट्स मतलब लीव्स के साथ वो वेस्ट सब्सटेंसेस भी बाहर निकल जाते हैं. मतलब प्लांट्स के पत्ते जब भी गिरते हैं तो उसमें से जो वेस्ट सब्सटेंसेस भी होते हैं वो पत्तों के साथ गिरते हैं. So our third point is also gets completed, that is the excretion. Now I am roughing these 3 points. Now our fourth point is the responsiveness to stimuli and the movement. Responsiveness to stimuli and the movement. If we suddenly enter to the cow shed, we will see that the cows will stand and they will be move. So these are the movement. तो अगर हम सडनली मतलब काउ शेड में चले जाएंगे तो जो काउज और जो बफेलोस होंगे उधर के वो खड़े हो जाएंगे और कोई कोई चलने भी लगेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट. इफ़ वी प्लेस अ पॉट and there is a plant on the window, we will see that the potted plant will grow towards the sunlight. The plants also shows the movement. तो अगर हमने एक potted plant मतलब pot जो होता है उसमें अगर हम प्लांट लगा दे, विंडो पर रख दे, तो हम देखेंगे कि जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ उगने लगेगा. तो ये क्या बताता है कि प्लांट जो होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं. सो दिस आर द मूवमेंट एंड द मूवमेंट और द चेंज टेकिंग प्लेस इन द लिविंग थिंग्स एट सच अ टाइम दिस आर द रिस्पॉन्स टू स्टिमुली यानी उत्तेजित प्रतिक्रिया.
तो जो चेंज टेकिंग मतलब जो चेंजेस होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, हलचल होती है लिविंग थिंग्स में, तो इसको क्या बोला जाता है? उत्तेजित प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिमुली। एंड द एबिलिटी ऑफ द लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली इज कॉल्ड एज द रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिमुली। तो जो एबिलिटी मतलब जो काबिलियत होती है लिविंग थिंग्स की, तो उत्तेजित प्रतिक्रिया की, तो इसको क्या कहा जाता है? रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। सो आवर पॉइंट रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली, फोर्थ पॉइंट, एंड मूवमेंट इज also gets completed. Now we will see our next point, that is the reproduction. Reproduction. Living things produce the another living things like itself. Some of them give birth to their young ones, while some of them lays the eggs and hatches the eggs. The new plants get generated by the seed. तो हम क्या देखते हैं? लिविंग थिंग्स जो होती है वो दूसरे लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करती है, एंड उनके जैसे ही तो कौन से जो लिविंग थिंग होते हैं वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं. वी हैव लर्न दैट ओविपोरस एंड विविपोरस, तो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, और कौन से डायरेक्ट अंडे देकर हैच करते हैं, मतलब गर्म करते एग को, और फिर उनमें से लिविंग थिंग्स निकल के आते. और प्लांट कैसे नए प्लांट्स को जनरेट करते हैं कि उनमें जो सीड होती है, वी हैव लर्न दैट हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. First the flowers get generated, the flower get transformed into the fruit, the fruit has the seed give rise to the new plants. तो हमने पढ़ा था कि सीड में से नए प्लांट्स उगते हैं. कैसे? कि जो फ्लावर मतलब प्लांट जो होते हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, फ्लावर किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? फ्रूट में. फ्रूट के पास सीड होता है, सीड से नए प्लांट्स उगते हैं. द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग जनरेट द अनदर लिविंग थिंग लाइक इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन. तो एक लिविंग थिंग्स दूसरे लिविंग थिंग्स अपने जैसा, खुद के जैसा दूसरे लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करता है, तो इसको क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन या प्रोक्रिएशन. आवर रिप्रोडक्शन पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज गेट्स कंप्लीटेड. नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज द डेफिनाइट लाइफ स्पैन. Definite lifespan. At the certain stage of the life, the living things are become the capable for the reproduction. Later on in the life reproduction step means the stage, their organs become the weak. तो मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो काबिल होते, कैपेबल होते रिप्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन का स्टेज होता है, वक्त होता है, तो उनके जो ऑर्गेन्स होते हैं वो वीक मतलब कमज़ोर होने लगते हैं. एंड देयर लाइफ्स बिकम्स टू द एंड मीन्स द लिविंग थिंग्स डाई लेटर ऑन. तो बाद में जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी लाइफ ख़त्म पर आ जाती है, यानी वो मर जाते हैं. एंड देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट्स, दे हैज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ स्पैन. बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, उनके पास अपनी अलग अलग जीवन शैली होती है. एंड फॉर एग्जाम्पल द डॉग लिव्स फॉर अबाउट 12 to 18 ईयर्स वाइल द ऑस्ट्रिच लिव फॉर द 50 ईयर्स. तो जैसे एग्जाम्पल के लिए डॉग 12 to 18 ईयर्स के बीच में वो रहते हैं, और जो ऑस्ट्रिच होते हैं वो 50 ईयर्स तक रहते हैं. देयर आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम ऑफ देयर लाइफ स्पैन. उनके लाइफ स्पैन में, जीवन शैली में अलग अलग डिफरेंसेस है.
A giant turtle found at the Galapagos Island in the South America lives for about 170 years. It is his lifespan. तो एक गेंट टर्टल है जो गैलापागोस आइलैंड में पाया जाता है साउथ अमेरिका में. तो उसकी जो जीवन शैली होती है वो 170 ईयर्स तक होती है. While the mayfly लाइफ स्पैन इज अबाउट 1 to 24 आवर्स. तो मेफ्लाई की जो लाइफ स्पैन जीवन शैली होती है वो 1 to 25 आवर्स होती है. Our 6th point, definite lifespan is gets completed. Now we will see our 7th point, that is a cellular structure. Cellular structure. Living things are made up of the small units called the cell. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो छोटे यूनिट से बने हुए होते हैं सेल. ऑल द एक्शंस एंड द प्रोसेसेस इन द बॉडीज ऑफ द लिविंग थिंग्स आर ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक सेल्स. तो जो एक्शंस और जो सभी प्रोसेस होते हैं बॉडी में, लिविंग थिंग्स के बॉडी में, ये सब किसकी हेल्प से लाया जाता है? माइक्रोस्कोपिक सेल से. सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली द one cell. They are known as the unicellular organism. They are known as a unicellular organism. While the other living things are made up of the many cells, such type of living things are known as the multicellular organism. जो मतलब कोई जो एक लिविंग थिंग्स है वो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होता है, उसको क्या बोला जाता है? सेलुलर स्ट्रक्चर. लेकिन जो दूसरे सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो दूसरे होते हैं लिविंग थिंग्स वो बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं, उनको बोला जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड द एमोइबा एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द यूनिसेलुलर. while the man, cow, mouse, elephant, onion tree, banyan tree are the मल्टीसेलुलर. जो एमोइबा और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल से बने हुए होते हैं. और जो लिविंग थिंग्स जैसे मैन, माउस, कॉकरोच, एलिफेंट, ये सब जो होते हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं. ये बहुत सारे सेल से ये बने हुए होते हैं. सेलुलर स्ट्रक्चर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स. सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के. So our point cellular structure 7 point is gets completed. In the India, national institutions at work. The institutions that work for the survey and conservation of the plants and animals in the different parts of India are the Botanical Survey of India 1890 and the Zoological Survey of India 1916. इंस्टीट्यूशंस जो संस्थाएं काम पर लगी हुई है सर्वेक्षण और संरक्षण प्लांट्स और एनिमल्स के करने के लिए इंडिया में अलग अलग पार्ट्स इंडिया के, जैसे वो संस्थाएं है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 और जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916, ये सब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं है. सो वी विल सी अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द यूजफुल लिविंग थिंग्स. Our 8th point name is the useful living things. Plants are used for the household as well as to industrial purposes. For example, the fenugreek, methi, okra and the apple, banana are used for the food, and the vasaka, adulsa, hirada, behada, asparagus are used for the medicines. तो जो plants होते हैं वो
हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो फेनुग्रीक मेथी होती है, ओकरा यानी भिंडी होती है, पटेटो, एप्पल, बनाना, ये सब खाने के लिए यूज़ किया जाता है। और प्लांट जैसे वसाका यानी अदुलसा, हीरादा, बेहादा, एस्पेरागस, ये सब मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। Animals are also useful for us, like the dog, cats are used for the domestic animals, and the horses and camel, oxen are used for the means of occupations. Fish, sheep and the fowl are used for the food, and the earthworm is very important for the agriculture. Animals भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, बहुत कामदायक होते हैं। जैसे कि जो डॉग और जो कैट होती है, ये हम डोमेस्टिक एनिमल्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। फिश और जो शीप जो होती है वो खाने के लिए यूज़ की जाती है। जो अर्थवर्म्स होती है ये बहुत ज़रूरी होती है एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी करने के लिए। और जो हॉर्सेस, कैमल, ऑक्सन जो होती है ये ऑक्यूपेशन, काम करने के लिए भी बहुत यूज़फुल होती है। सो आवर 8 point यूज़फुल लिविंग थिंग्स point is also gets completed. Now we will see our next point, that is the harmful living things. It is a 9 point. Harmful living things. Some animals and plants around us are harmful for the man. For example, the mosquitoes and the flies spread the diseases, the cockroaches and the lice destroy our food, and some of the poisonous lizards, snakes, spiders can be even cause to the death. And if the wild animals enter to the, like the elephants enter to the human settlements, there will be the lot of destructive. तो हमारे आजू बाजू में एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे मतलब हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। जैसे कि जो मॉस्किटोज़ और जो फ्लाइज होते हैं ये हमको डिजीजेस, बीमारियां बहुत फैलाते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया मॉस्किटोज से होता है। और जो लाइस और जो रैट्स जो होते हैं, जो माउस होते हैं, वो हमारे जो खाने हैं उसको मतलब वेस्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। जो स्पाइडर्स, जो लिज़ार्ड्स और जो स्नेक वो पॉइजनस होते हैं, अगर वो काट ले तो ये डेथ भी हो सकती है, कोई मर भी सकता है। और जो एलिफेंट्स, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली हाथी जो होते हैं, अगर वो आ जाए ह्यूमन के बस्तियों में तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव मतलब बहुत हार्मफुल, बहुत तबाही मचा देंगे। एंड सम प्लांट्स आर ऑल्सो हार्मफुल लाइक द पॉट्स ऑफ द नीटल, कोलोकेशिया लीव्स कॉजेज ईचिंग्स, एंड द ओलेंडर एंड द लंतना हैज़ द स्ट्रॉन्ग ऑडर्स, द Datura plant is the poisonous. Uncontrolled growth of the fungi and algae may cause the water pollute and of the drinking water and may cause the spread diseases and may it also cause. तो जो नीटल के जो पॉट्स होते हैं, जो फली होती है नीटल की, कोलोकेशिया के जो लीव्स, पत्ते होते हैं, इससे ईचिंग यानी खुजलियाँ आती है। और जो धतूरा प्लांट जो होता है ये जहरीला, पॉइजनस होता है। और जो अनकंट्रोल मतलब हम उस ग्रोथ को संभाल नहीं सकते, अनकंट्रोल ग्रोथ जो होती है फंगी और एल्गे के, इससे क्या होता है कि मतलब जो वाटर, जो पीने का पानी होता है उसको दूषित कर देता है और बहुत सारे जो बीमारियां होती है वो भी फैला देती है। सो आवर 9 point is also gets completed, that is harmful living things. Now we will see our 10 point, that is the wild animals. Wild animals. Wild animals that hunt the other animals for their food is known as the predators. जो वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली प्राणी होते हैं, वो दूसरे प्राणियों को हंट करते, शिकार करते अपने खाने के लिए, उसको बोला जाता है प्रीडेटर्स। फॉर एग्जाम्पल टाइगर लॉयंस, एग्जाम्पल के लिए टाइगर लॉयन, वुल्फ्स, लिपर्ड्स। Sometimes due to the deforestation, such animals enter to the human settlements and they may also kill to the domestic animals as well as the people. Deforestation मतलब deforestation की वजह से, फॉरेस्ट नहीं होने की वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जो प्राणी होते हैं, वो अगर ह्यूमन की बस्तियों में आ जाते हैं तो वो जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनको भी मार देंगे और लोगों को भी मार देंगे। सो वाइल्ड एनिमल्स, आवर पॉइंट्स
get completed. So we should always save the plants and not to hurt any of the living things for our fun. तो हमको plants को बचाना चाहिए. We have to plant more plant. हमको ज़्यादा से ज़्यादा plant को plant करना है, मतलब plant ही करना है. और जो living things होते हैं, दूसरे जो जानवर होते हैं, हम उनको hurt नहीं करना है कि उससे हमारे fun के लिए उनको hurt नहीं करना है. So our lesson gets completed, that is the living world. In it we have learned about the 10 points that we have learned about the food is necessary for the growth. Our next point was the respiration. Third point was the excretion. Fourth point was the responsiveness to stimuli. Fifth point was the reproduction. Sixth point was the definite lifespan. And our 7th point was the cellular structure. Our 8th point was useful living things. Our 9th point was the harmful living things. And our 10th point was the wild animals. So our lesson gets completed, that is the living world. Jai Hind.